गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉइल कंपैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कंपैक्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सॉइल इम्प्रूवमेंट. It is the densification of soil by the application of mechanical energy. It is a process by which the soil grains get rearranged more closely, the volume of air voids get reduced and the density of the soil increased. ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, कॉम्पैक्शन के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है. Then we have also discussed difference between compaction and consolidation and the factors affecting compaction. ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डू compaction in the laboratory, means laboratory test of soil compaction. So today's lecture is soil compaction in the laboratory. The soil compaction in the laboratory is done by standard Proctor test or modified Proctor test. The procedure of these two tests are almost similar. बहुत का फर्क है स्पेसिफिकेशन का, वो हम लोग आगे देखेंगे. R. Proctor, while building dams in the USA in the early 30s, developed the principle of compaction in a series of articles in Engineering News Record. As a tribute to the Proctor, the standard laboratory compaction test which he devised is called standard Proctor test. In this test, a specified amount of compactive effort is applied to a constant volume of soil mass. The compactive energy is reported in joule per meter cube. In the laboratory, the impact compaction is most commonly used. A hammer, or we can say rammer, is dropped several times on a soil sample in a mold. In the field, compactive effort is the number of passes or coverage of a roller of a certain kind and weight on a given volume of soil. As we have discussed, we have two laboratory tests, that is standard Proctor test and modified Proctor test. Let us discuss one by one. That is standard Proctor test. Remember, in this case, the volume of the mold is 944 cubic centimeter. Number of layers of the soil is 3. Number of blow is 25. Weight of the hammer is 2.495 kilogram and height of the fall is 304.8 mm or 12 inch. ये याद रखना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का स्पेसिफिकेशंस. It means in a standard Proctor test, a standard volume is filled up with soil in 3 layers. Each layer is compacted by 25 blows of a standard hammer weight falling through 12 inch. Knowing the weight of the compacted soil and its water content, the dry unit weight of the soil can be calculated. टेस्ट लेबोरेटरी में हम कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा, आइए हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं. सबसे पहले हम सॉइल लेते हैं ड्राई डस्ट के फॉर्म में एंड द टोटल सॉइल मास इन ए ड्राई डस्ट स्टेट इज वेड. द सर्टेन परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड विथ सॉइल एंड मिक्स थॉरली. सॉइल मास लिया, इसमें सर्टेन परसेंटेज, नॉर्मली 8% 10% से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लोअर साइड से, और उसको मिक्स थॉरली, उसको पूरे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं.
Then the soil mix is placed inside the mold with a collar in 3 layers, compacted by 25 blows by rammer at each layer. वो जो हमने सॉइल लिया उसको एक बार हमने इसमें मोल्ड में डाला, देन उसको 25 नंबर ऑफ ब्लोज से हमने उसको कॉम्पैक्ट किया, फिर हमने एक लेयर डाला, फिर 25 नंबर ऑफ ब्लोज से कॉम्पैक्ट किया, फिर तीसरी बार भी हमने उस पर सॉइल को फिल किया और 25 नंबर ब्लोज से हमने उसको कॉम्पैक्ट किया. After compaction, the collar is taken out and the upper surface is smoothened. Then the mold with the compacted soil is weighed. उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ से क्या करते हैं, कॉलर को हटा लिया और जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको ट्रिम ऑफ कर दिया, उसके जो सरफेस स्मूथ कर दिया, और मोल्ड प्लस सॉइल का हमने कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट ले लिया. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि W आता है, W किलोग्राम ये आ रहा है. Thereafter, the sample is taken out of the mold by sample extruder and soil sample are taken in can for water content determination. क्या करते हैं, हम मोल्ड से पूरा सैंपल को निकाल लेते हैं और उस सैंपल में से थोड़ा थोड़ा 2-3 कैन में हमने रख लिया वाटर कंटेंट डिटरमिन करने के लिए. ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ फॉर ए पर्टिकुलर वाटर कंटेंट. The process is repeated, increasing the water content until the compacted weight of the soil start decreasing. अब क्या करेंगे हम कि शुरुआत हमने 8-10% से किया, फिर 2% एक्स्ट्रा वाटर लिया हमने, उसमें ऐड किया, फिर 2%, ऐसा करके 3-4-5 बार हमने रिपीट किया. तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि कॉम्पैक्टेड वेट हमारा क्या है, डिक्रीज न करने लगे. इस तरह का टेस्ट को रिपीट करते रहेंगे. द सैम्पल इन द कैन आर वेट, जो हमने छोटे कैन में लिया हमने उसको वे कर लिया. देन दे आर अलाउड टू बी ड्राइड इन द ओवन फॉर 24 आवर. देन द ड्राई वेट इज टेकन विद सॉइल. जैसे हम वाटर कंटेंट डिटरमिन करते हैं वो हम प्रोसेस अपनाते हैं. द वेट ऑफ द एम्प्टी कैन इज नाउ टेकन. फ्रॉम दिस डेटा वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल. सबसे पहले तो ये समझना है कि वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल हम मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड अभी हमने बताया वो स्टैंडर्ड है. अगर स्टैंडर्ड नहीं भी पता तो हम उसके डायमेंशन को ले करके, मोल्ड एक सिलेंडर नुमा है, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो टोटल यूनिट वेट गामा टी कैन बी कैलकुलेटेड वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड. इससे हमारा वंस वी नो द बल्क यूनिट वेट we can calculate the dry unit weight, that is bulk unit weight divided by 1 plus water content. अब सपोज हमने 4-5 टेस्ट किए अलग अलग वाटर कंटेंट पे. तो अब क्या करेंगे हम कि we will take water content on x axis and dry unit weight on y axis and we will plot a graph like this. हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि initially the graph increases, after that it starts decreases. In my previous lecture I have already explained why this curve increases then decreases as per Proctor's explanation and other explanation also. तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि क्यों ये कर्व पहले इंक्रीज होता है, फिर आफ्टर इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इट डिक्रीजेस. तो अभी क्या देखा हमने कि ये इस तरह का एक कर्व हमारा वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में आता है. दिस कर्व बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट इज कॉल्ड compaction curve. The dry unit weight of each compacted sample is plotted against the water content and the curve is called compaction curve. Remember, the curve is unique for a given soil type, method of compaction and comparative effort. ये यूनिक होगा अगर हम सॉइल को चेंज कर दें, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन चेंज कर दें या कॉम्पैक्टिव एफर्ट चेंज कर दें, तो ये कर्व भी अलग तरह का आएगा.
the peak point of the compaction curve corresponding to maximum dry density. Here we can see the peak of the curve, the corresponding to that, this is maximum dry density, or we call it as MDD. And the water content corresponding to MDD is known as optimum moisture content, or OMC. The water content corresponding to maximum dry density is known as optimum moisture content, or OMC. We have some typical value or ranges of maximum dry density and optimum moisture content. For maximum dry density, it is 16 to 20 kilonewton per meter cube, and for AMC the typical range is 10 to 20%. And if we talk about maximum range, for maximum dry density it is 13 to 24, and for optimum moisture content 5 to 30%. यहाँ पे हमें दो बात और समझने की ज़रूरत है. Relative compaction. Relative compaction is gamma D field divided by maximum dry density, or gamma D max. It is usually expressed in percent, so multiplied by 100%. Relative compaction should not be confused with the term relative density. Relative density is equal to E max minus E natural divided by E max minus E minimum into 100%, जो हमने पिछले क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे. आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. प्रॉब्लम यह है, द इन सिटू वॉइड रेशियो ऑफ ए ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट इज 0.50. द मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल वर डिटरमिन्ड टू बी 0.75 and 0.35. If G is equal to 2.67, then we have to determine the relative density and relative compaction of the deposit. Relative density is equal to E max minus E natural divided by E max minus E minimum into 100%. Just put the value of E max and E minimum and E natural, we will get 0.75 minus 0.50, 0.75 minus 0.35 into 100, that is 62.5%. Gamma D max will be G gamma W by 1 plus E minimum. Why? When the density is maximum, void ratio will be minimum. So just put the value of gamma G 2.67, gamma W 9.8, 1 plus 0, it will become 19.38 kilonewton per meter cube. Gamma D minimum, for minimum dry density, void ratio will be maximum. So gamma D में G gamma W 1 plus E max, that is 2.6, 9.8, 1 plus, that will become 14.95 kilonewton per meter cube. Gamma G natural or in situ, G gamma W plus divided by 1 plus E natural or in situ, that will be 2.67 into 9.8, 1 plus 0.5, that is 17.744 kilonewton per meter cube. So relative compaction is equal to gamma D field by gamma D max, that is equal to 17.44 divided by 19.38 into 100, that is 89.9%. So अभी हमने पूरा डिटेल प्रोसीड्योर समझा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का, उसका रेंज, उस पर एक एग्जाम्पल हमने सीखा. इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज कॉल्ड Indian Standard Light Compaction Test, IS 2720 Part 7 1974. टेस्ट प्रोसीड्योर वगैरह सब सेम है, जस्ट यहाँ पे एक लिटिल मॉडिफिकेशन क्या है. वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज 1000 cc and weight of the hammer 2.6 and height of the fall is 310. Number of layer same, number of blows same, प्रोसीजर वगैरह भी सब सेम होगा. अनदर टेस्ट इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II to better simulate the compaction required for airfield to support heavier aircraft. Test procedure is same as standard Proctor test, just the number of layer is 5 and weight of the hammer is now
4.54 and number of blows remains to 25, but height of the fall is now 18 inch instead of 12 inch. तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं. The Indian standard equivalent of the modified Proctor test is called Indian Standard Heavy Compaction Test, जो IS 2720 पार्ट 8 1983 के ज़रिए के स्पेसिफिकेशन के ज़रिए करेंगे. ये भी सेम है एज पर IS लाइट, बट जस्ट क्या है, नंबर ऑफ लेयर 5 हो गया, वेट ऑफ द हैमर 4.9, हाइट ऑफ द फॉल 450 mm हो गया. ये बस याद रखने की ज़रूरत है, बाकी प्रोसीड्यूर वगैरह सब सेम है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉम्पैक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट, फील्ड टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस